the role of Mrs. Khan, number 1. She is the voice of the rural village woman, and we are ready to hear the voice now. Ma'am, please say a few words. जैसा कि ओम जी ने कहा, मेरे लिए बहुत ही मेरी ज़िंदगी की पहली इंटरनेशनल फिल्म है, एंड थैंक यू लेस्ली फॉर चूजिंग मी एंड मेकिंग मी अ पार्ट ऑफ दिस वंडरफुल सुपर डुपर एज इट इज़ अ हिट ईस्ट इज़ ईस्ट। और जब मुझे ये फ़ोन किया गया ऑनलाइन प्रोड्यूसर से कि ईस्ट इज़ ईस्ट के लिए आपका मिसेस खान नंबर 1 के लिए सोचा जा रहा है, तो इससे वेस्ट इज़ वेस्ट के लिए, तो आप ये बताइए कि आपका क्या ख्याल है। मैंने कहा इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता है, क्योंकि ईस्ट इज़ ईस्ट अपने आप में एक माइलस्टोन है कॉमेडी का, वैल्यू ओरिएंटेड कॉमेडी का। ऐसी भी नहीं है कि बोरोड ह्यूमर है, ह्यूमर उसके अपने से था और इतना रियल है। जो समस्या आज क्रॉस कल्चर की आ रही है, जब लोग यहाँ से निकल के जा रहे हैं, लंदन जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, फिर वहाँ बच्चे जो पैदा होते हैं वे सड़कों पर हैं और उनको ही नहीं समझ में आ रहा कि वो क्या इधर के हैं या उधर के हैं। उसमें अपनी विषमताओं पे हंसना और इतनी सहजता से हंसना, उसके लिए जब इन्होंने मुझे कहा, तो जब मैंने ईस्ट इज़ ईस्ट देखा था तो ये सोचा था कि हमेशा ये कहते हैं डोंट फॉरगेट देयर इज़ मिसेस जॉर्ज खान नंबर 1, तो मैं सोचती थी कि ये कौन है लेडी, शायद मुझे एंड में दिख जाए, वो दिखी नहीं। पर 11 साल बाद इन्होंने जब सीक्वल बनाया तो मैं वो मिसेस खान नंबर 1 बनूंगी, ये तो सोचा भी नहीं था। आप फिल्म इसलिए सपोर्ट करें क्योंकि मैंने लेस्ली को दिन रात कोशिश करते हुए देखा है कि हिंदुस्तान में ये फिल्म उतनी सफल हो जितनी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हुई है। पर लेट मी टेल यू, ये सिर्फ पाकिस्तान की प्रॉब्लम नहीं है, ये जो आजमगढ़ से जाते हैं या जो गुजरात से जाते हैं या राजस्थान से जाते हैं या पंजाब से जाते हैं, और आज दुनिया सिमट गई है। हमारे अपने ग्रैंड चिल्ड्रन वो जब यहाँ आते हैं तो एक नमूना होते हैं, पर हम उन्हें नमूना मानते हैं। उनकी त्रासदी सोचिए कि वो वहाँ पैदा हुए, उनको मालूम नहीं है कि वेदर दे बिलोंग टू दैट प्लेस और दिस प्लेस। पर फिर कैसे डायलॉग पैदा होता है उन बच्चों में और ग्रैंड पेरेंट्स में, और रूट्स को ढूंढना, रूट्स के ढूंढने का एक इतना बढ़िया एक लाइटर वे में ये जो एक फ़िल्म है, जो कि ना टेररिज्म की बात करती है, जो कि आपस में जोड़ने की बात करती है, जो कि एक हैप्पी फिल्म है, इमोशंस की फिल्म है, उसका एक हिस्सा बन के जो मैं आपके पास आई हूँ इस मेरी पहली इंटरनेशनल फिल्म के लिए, मुझे बहुत खुशी है। मेरा सौभाग्य है लेस्ली, मैं 7वें आसमान पे हूँ। These are her words. Also, we have with us Raj Bhansali, who is playing Zaid. Zaid is a village boy, very warm, very patient, and basically he is the first ever real friend that Sajid is able to make in his life. So, over to Raj, how is it like to play Zaid? अभी मूवी के बारे में तो मैं कुछ बता नहीं सकता क्योंकि इन्होंने सब कुछ बता दिया है, लेकिन एक बहुत अच्छी चीज़ जो ये मूवी की है कि इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, लेकिन एक अच्छी चीज़ है कि हर कैरेक्टर का अपना इम्पोर्टेंस है। तो मतलब आप पिक्चर देख के आओगे तो आप हर एक कैरेक्टर को याद रखोगे, ऐसा नहीं है कि आप इस कैरेक्टर को भूल जाओगे। सो आई थिंक फॉर मी दिस इज़ अ वेरी बिग मूवी, और मुझे तो काफ़ी मज़ा आया काम करने में और सीखने को काफ़ी मिला, क्योंकि हीला मैम थे, विजय सर थे, ओम सर है, और आकिब से भी मुझे काफ़ी कुछ सीखना मिला। तो आई थिंक मेरे लिए ये काफ़ी बड़ी पिक्चर है। Thank you, Raj. The cast of West is West into the top 3 is Ela Arun, Akib Khan, Raj Bhansali, Vijay Raj, Miss Linda Bassett, who we also missing here, and Jimmy Mystery. The crew includes, of course, our producer, Miss Leslie Udwin, director Andy Day Emoni, director of photography Peter Robertson, editor John Gregory, and music by the super hit trio of Indian film industry, Dr. Ehsan Lloyd, and now the media interaction that is followed. Why is a UK British film releasing after 15 weeks after release in UK when a Hollywood film is releasing on the same day in India? Well, there is one fundamental problem
around the world, but it is a particular problem in the Indian industry, and that is piracy. And the English distributors, the UK distributors, were absolutely determined that there should be no pirated DVDs floating around during the theatrical release of the film in the UK. I'm happy to report that we have totally controlled that to a degree where on my Google search, every time West is West comes up, I see at least 3 or 4 requests every day from piracy website users saying, please can someone tell me, where can I find West is West? I'm desperate to see the film, I can't find it anywhere online. नहीं कुछ नहीं, पंजाबी में गालियाँ हैं 2-3. देखिए जो इन्होंने बताने की कोशिश करी कि बच्चा कहाँ से सीखता है, आप अपने आप को भी झांक के देख लीजिए, और ख़ास तौर से बहुत से माँ बाप सुबह से शाम तक इन 2 शब्दों का इस्तेमाल चाय के प्याले के लिए, वो कप उठाने के लिए, यही कह के वो किधर गया बीप, ये किधर गया बीप. बच्चा सीख क्या है उसको मालूम ही नहीं. आप कहते हैं बच्चे बिगड़ते हैं, बच्चे कुछ, ये तो बहुत अच्छी फिल्म है, क्योंकि उससे पूछते हैं कि डू यू नो पंजाबी, एंड द बॉय सेज यस आई डू नो, और वो 2-3 गालियाँ जो उसको पढ़ती रहती हैं, इनसे पढ़ रही होंगी चाहे पिताजी से या किसी से भी. सो हम अनजाने में सिखाते तो हम ही हैं. दैट्स हाउ इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फिल्म. और ये सोच के सेंसर करना चाहिए कि भाई किस लिए किया जा रहा है, कहाँ से सीखा. दिस इज बहुत वैल्यू वाली चीज़ है कि अपने बच्चों को लेके आए. That's the thing. Let's see. As far as the census education goes, did you go for the examination committee or the revising committee? Which committee decided on this? Normal committee. Normal committee, because we don't have time to go for the revising committee. I just as a last word on that, and we'll move on to another question. In England, we also have censorship boards. But in England we have a 15 certificate, and I would beg India to consider that to say there is nothing between 18 and children, 15-year-olds have an absolute right to see important, valuable and brilliant films. Yes. They're grown-up people. In this day and age, 15-year-olds are not babies. Have they given A certificate or UA? They have given 15 plus, which is great because it means the 13-year-olds will get in. Just as the 16-year-olds will get in here because they'll pretend to be here older. He is asking. Here it's 18. They've given it an adult certificate. Not UA. That's what I begged for. I begged them for a UA. And it would have been just and right that this film gets a UA. Because parental guidance. The parents know, they see the trailers, they know whether to take they know whether they will allow their children to hear gullies or not. Okay? But we would never compromise our film. Not in a million years. This film is too brilliant and too precious to compromise it by putting stupid beeps in it. But in any case, since the film has been released 15 weeks after its UK release or world release, didn't you think it prudent to wait for some more days to fight the battle with the censors after the tribunal is there? No, because we've announced our release, and you have to weigh up confusing people by, oh, is the film coming in June or is it coming, the revision committee, I was warned by the censor board, takes a long time. So we couldn't sacrifice our release plans. Sunil Wadhwa, who's a wonderful creative distributor, has worked very, very hard for this, and you can't jeopardize all that. $4.5 million is what we're on at the moment. You've got more in return, I feel. What do you mean we've got? It does not remain a small budget film anymore. It will always be. This is for the next film. We are saving for the next film because we don't want to stop there. सर काफी ऐसे डायरेक्टर्स हैं जिनको ए सर्टिफिकेट से कोई फर्क नहीं पड़ता. देखिए क्या है कि अभी ये फिल्म 18 साल के देखेंगे, इसके बाद डीवीडी आएगा, फिर 14 साल के भी देखेंगे, और सेंसर रोक ले अगर उनमें दम है तो वो घर में देखेंगे. तो आपको कोई फर्क पड़ता है ए सर्टिफिकेट, यूएस सर्टिफिकेट या यू सर्टिफिकेट? मुझे पर्सनली फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्रोड्यूसर को फर्क पड़ता है क्योंकि उनकी ऑडियंस मान रही है.
एक्चुअली देखा जाए तो इंडिया में इट्स अ मॉकरी ऑफ सेंसर बोर्ड. हर थिएटर में यू कैन सी 10-year-old 12-year-old. चलिए छोड़िए अब सेंसर बोर्ड को बेचारे को. अभी नाउ we are about to release the film and let's be positive. Yes. Let's not go into. But towards the end, this is definitely a value-oriented film. इसलिए शायद she is hurt probably. Mr. Shankar Mahadevan is like showing light to the sun, so I will not try it. I'll just request him to kindly say a few words. Sorry for the delay. I was recording with Mr. Kamal Hassan and he had to do something really urgent, so because he was flying out of the country, so I had to finish that, and I truly apologize for my delay. But thank you, Leslie. Thank you, everybody. Thanks, Ela ji and everybody, the whole team of West is Best. We are so happy to be part of this film. I'm missing Ehsan and Loy today. They are performing for the Palms exhibition today, so unfortunately they could not come. But I'm glad that I was able to come over here and be part of this wonderful film, which is already such a big hit. So that feeling is great. So I really thank the team for making me part of this. May I say I am so grateful to you, Shankar, to Ehsan and to Loy, because of course Shankar is one of a trio and they were all the musical directors on this film and worked on it. I'm so grateful because the first time we met, gosh, a year and a half ago now, and I went in thinking there is no way in the world that this trio, whose talent I really am in awe of, a trio with the most awe-inspiring talent who create hit after hit after hit. There's no way they're going to say yes to my film because my budget was so small. And my budget was small because the UK film industry was in recession and in crisis.